So hello everyone, this is Akshay here and welcome back to the undergrad day of our GFG Pure Streak and a continuation of our string playlist. So today we're gonna see a question that if the particular string is a palindrome or not, right? So ये question बहुत जगह पूछा गया है यार. If I see the company tags and Paytm, Zoho, Amazon, DSA, but ये लगता है बहुत पुराना समय था. 2023 में तो बिल्कुल मेरे को नहीं लगता ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे आप इंटरव्यू में, बिल्कुल भी मत करना, राइट? ऐसे ही मतलब हंसते खेलते ही पूछ दिया तो दैट्स डिफरेंट थिंग, बट आई डोंट थिंक दिस मतलब ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया इंटरव्यू में, ठीक है? दैट्स व्हाई कंपनी टैग्स आर गिवन हियर एज वेल. ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रिंग दे रखा है, हमें बस ये चेक करना है कि पैलिंड्रोम है या नहीं. तो पैलिंड्रोम का क्या मतलब होता है यार? कि पैलिंड्रोम का ये मतलब होता है कि लेट्स से यू हैव अ स्ट्रिंग ए बी सी एंड देन यू हैव लेट्स से सी बी ए. इसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर और जो लास्ट कैरेक्टर है वो सेम होना चाहिए. सिमिलरली आपका जो सेकंड कैरेक्टर है आपका सेकंड लास्ट कैरेक्टर सेम होना चाहिए, एंड द थर्ड वो अपना थर्ड लास्ट कैरेक्टर होना चाहिए, राइट? तो मतलब जो जिस जिस ऑर्डर में आप आगे से लेफ्ट से राइट जा रहे हो उसी ऑर्डर में मतलब आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो, राइट? समझ गए आप इतनी बात कि दिस इज द पैलिंड्रोम. तो ठीक है, लेट अस कंटिन्यू. तो वी नो दैट हाउ द पैलिंड्रोम वर्क्स नाउ. सो व्हाट वी गोना डू नेक्स्ट इज कि इसकी पहली अप्रोच क्या हो सकती है यार? कि लेट्स से हमारे पास स्ट्रिंग दे रखा है. व्हाट्स द स्ट्रिंग गिवन टू अस इज ए डबल बी एंड ए, करेक्ट? So A double B and A, and we need to check if it's a palindrome or not. So method one would be कि अगर हमारे पास ये इसका reversal string हमारे पास किसी तरह आ जाए, right? That we had a reversal string in our hand, that would be A, B, B, A again, right? But this A, the first A is nothing but the last A here. So can we reverse the string? Can we reverse the string and store this particular reverse string in some variable? How can we do that? मतलब हमें उल्टा चाहिए, LIFO, लाइक लीफो मेंटेन हो रहा है. तो अगर हम एडिशनल जेस्चर यूज करें तो हम एक स्टैक का यूज कर सकते हैं. लाइक वी पुट द सेम एग्जैक्ट सेम थिंग इनटू अ स्टैक, right? A, B, B, A would be put, and then we popped out one by one, right? So instead of popping it out, what we will do, we will compare the first character of the given string with the topmost element, and then we will pop it out. Then we'll compare the second character of the given string with the topmost element with the second element of our stack, and then again we'll pop it out, right? And at any interval, if I see that the top element of the stack and the current element in which we are traversing in the given string, if it is not equal, then we'll say that it's not a palindrome, right? So that would be method one. तो तुरंत से इसका कोड देखते हैं, and then we should proceed ahead with the coding section. Meanwhile, you also pause this video, try to code this approach by yourself, and then we can proceed ahead. Okay, so that's the method one code in Java. So let me give you a very quick code walkthrough. So first we have maintained a variable that is palindrome, and we have defined it at once. So that means we are assuming that the given string is palindrome, correct? Now we are maintaining a stack, and we are pushing each and every character of a given string into the stack so that we can get the reversal of a string in our hand to compare with the given string, right? Now we are again traversing in the given string with the for loop, and then we are checking if the character s.caret I is, if it is not equals to the topmost element of the stack at any point of time, then we just have to say that particular string is not a palindrome, correct? And just return that is palin, and that's it. So what would be the time and space complexity? Time complexity would be O of n, because we are using two parallel for loops. So it would be O of 2n. Ignoring the constant, you can say O of n. What's the space complexity? We are using a stack to push each and every element of the given string. So it would be O of n again. So before submitting the submission, a question goes to you again. Will this solution get submitted? Even if it's a brute force, or let's say the method one we have seen. So will this solution get submitted? So before hitting the submit button, आपको question का answer करना है. So how we can do that? We can clearly see that the time complexity is O of n, right? And what is n pointing to? 2 into 10 power 5. So that means we are taking 2 into 10 power 5 iterations to complete our code, right? And it is less than 10 power 8. So अगर 10 power 8 से less है तो हमारा code submit हो जाएगा, and that's it. If I hit the submit button, it should definitely get submitted. So one thing I will share you at the last of this video, one interesting thing कि मैंने question 2020 में like मैंने कैसे solve किया था. Like I was also laughing at my code, and I think you will also laugh. And ठीक है, तो इसका मेथड 2 देखते हैं आप. मेथड 2 का क्या मतलब है कि हमें, अब देखो, हमें इसकी डेफिनेशन क्या आती है कि द फर्स्ट कैरेक्टर एंड द लास्ट कैरेक्टर शुड मैच एंड साइमल्टेनियसली और सिमिलरली फॉर द रेस्ट ऑफ द कंजुगेटिंग कैरेक्टर्स, राइट? सो व्हाट वी कैन डू हियर इज दैट वी कैन इनिशियलाइज अ वेरिएबल लेट्स से लो एट द स्टार्टिंग इंडेक्स and a high at the ending index, right? Now we can just run a for loop while L is less than equals to H, and we will just check if any point of time if S of L is not equals to S of H, right? Then I will say that it is not a palindrome, and in this case I will say return 0. And if that's not the case, if it is not hitting this if statement, then definitely the character is a match, right? So in that case we will just move ahead L plus plus and H minus minus, correct? And that should serve our purpose, correct? So what is the time complexity of this approach? So we are traversing just half of the string, right? So it would be O of n by 2. But again, ignoring the constant, we can say that the time complexity is O of n, and the space complexity, since we are not using any additional data structures, we are just using some variables, so it would be O of 1, correct?
And we have done the constraint analysis as well. So this solution should get submitted. Let us hit the submit button, then we can see. Okay, so that is the method to approach in Java, and you can clearly see that we have run a while loop here, and we are just comparing the first and the last items subsequently for the rest of the characters. And what's the time complexity? It's O of n by 2. Let us see the compilation, and then we can hit the submit button for this approach. Okay, so what's the problem? So okay, the variable name here is small s, and I'm using capital S. So okay, unnecessarily this video length is going long, but okay, we are seeing all the approaches, so never matter. ग्रेट कंपाइलेशन हो गया यार अभी से सबमिट करते हैं और वो जो लास्ट इंटरेस्टिंग बात थी जो मैं आपका सोल्यूशन को दिखाने वाला था लाइक मेरा सोल्यूशन जो मैं आपको शो करने वाला था वो एक बार तुरंत से देखते हैं so great ये solution भी हो गया submit so if I go on to the submission section if you see the last submission was in 2020 like while I was preparing my placement season और जब मैं आज ये कोड देख रहा हूँ like 3 साल बाद तो मेरे को बड़ा हंसी आ रहा है यार देखो मैंने क्या लिखा है यार सबसे पहले तो मैंने स्टैक में पुश किया एंड देन आई एम चेकिंग इफ इट इज इक्वल देन मार्क p इक्वल्स टू 1 एंड इफ इट इज नॉट देन p इक्वल्स टू तो अगर इक्वल है तो मार्क ही क्यों कर रहे हो यार मत करो ना बस वो चेक करो जहाँ नॉट इक्वल है तो ये देख के मेरे को थोड़ा लगा बट ठीक है टाइम के साथ साथ वी इवॉल्व तो आपके साथ भी यही होगा बस बने रहो हैव सम फेथ इन योरसेल्फ एंड देन वंडर्स कैन हैपन सो मिलते हैं कल के पीरियड के डेट 302 में टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग बाय बाय एंड टेक केयर. And one last thing that is the C++ code. I don't think a walkthrough is required. So let us end this video and you can get the source code in my description link. So bye bye यार कल मिलते हैं.